दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की तुरजोइस की इस फेस्ट में अब मैं आ चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे बाल भारती स्कूल की एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही आकर्षित मॉडल बनाया है पीएच टेस्टिंग के लिए, जो कि सॉइल टेस्ट करके उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमें बता सकता है। बहुत ही यूनिक लगा ये मुझे पूरा मॉडल सबसे ज्यादा एग्जीबिशन पे। तो अपने इस पीएच टेस्टिंग मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो हमने बेसिकली एक वाटर एनालाइजिंग किट बनाई है एंड द किट हैज गॉट वेरियस कंपोनेंट्स व्हिच इंक्लूड्स अ पीएच सेंसर, अ कंडक्टिविटी सेंसर एंड अ soil moisture sensor. Apart from this, we have also created an application. We feed the values that we get out of the sensor into our app, which accordingly tells us what all type of crops should be grown within a particular pH range or conductivity range. Then we have this soil moisture sensor, which ensures that apt amount of water reaches the plant. If the water content in the soil is enough, nothing would happen. But if it's not enough, it would start this motor pump and water would automatically flow in the crops. The idea is to make the farmers well aware of the type of crops they should be growing in their region. The average cost for the kit is about 1,000 rupees and the application is free of cost. More important thing is the components that we have, it's because we have this ATL tinkering lab in our school under the Niti Aayog program.